बहुत ही सुंदर भजन है, इससे मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। Bhakti Vinod is singing news of great happiness. भक्तिविनोद ठाकुर जी इसको बहुत प्रसन्नता से गा रहे हैं। There's so much news in the world today, आज की जगत में बहुत सारे समाचार हैं, but mostly it's bad news. लेकिन सब बुरे समाचार। Somebody got murdered. किसी का हत्या हो गई। There was a fire in Hong Kong that killed 128 people. एक हांगकांग में आग लगी जिसमें 128 लोग मर गए। You know, there's a war going on in Ukraine. I mean, it's just bad news everywhere. यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इस प्रकार से सभी बुरे समाचार हैं। But from Bhakti Vinod, लेकिन श्री भक्तिविनोद we're getting good news. लेकिन वो बहुत अच्छा समाचार दे रहे हैं। Very good news. बहुत अच्छा समाचार दे रहे हैं। What has happened? क्या हुआ है? Well, Lord Nityananda नित्यानंद प्रभु जी ने has opened up a marketplace. एक मार्केट प्लेस खोला है। Just like there's so many marketplaces. हमने बहुत सारे दुकानें देखी हैं। I say coming here tonight, there's so many marketplaces. हम जब आ रहे थे तो देख रहे थे कि बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। Somebody's selling blankets. कुछ कंबल बेच रहे थे। Somebody's selling fruit. कुछ फल बेच रहे थे। Somebody's selling eggs. कुछ अंडे बेच रहे थे। There's so many marketplaces. बहुत सारे दुकानें थी इस प्रकार। But now a very special marketplace has been opened up. This is called Namahatta. So a very special marketplace has been opened up. बहुत ही विशेष बाजार खुला है यहाँ पर। This is the marketplace of the holy name, Namahatta. ये नामेरहट है, हरि नाम का। So, where has he done this? Is it open? Have he opened in Pune? Where is this marketplace? There's a special marketplace has been opened up. ये बहुत ही विशेष बाजार यहाँ पर खोला गया। Where has it been opened? कहाँ पर ये खोला गया? In Surabikund. ये सुरभिकुंज में खोला गया। This is a place in Bengal. ये बंगाल में एक विशेष जगह। Near the marketplace where Lord Nityananda opened this place near where Lord Chaitanya appeared. ये जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ उसके पास में जगह है जहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने बाजार को। And every market has a manager, right? हर मार्केट में एक मैनेजर होता है। So who's the manager of the market? इसका कौन मैनेजर है यहाँ पर? Kodanitai. Kodanitai. Lord Nityananda is the market manager. नित्यानंद प्रभु जी इस बाजार के मैनेजर हैं, व्यवस्थापक। So now we go to the second verse. दूसरे श्लोक का। And what's going on in that marketplace? उस बाजार में क्या चल रहा है? Bhaktivinoda says wonderful things are going on in our marketplace. भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि बहुत अद्भुत चीजें इस बाजार में हो रही हैं। What is being sold there? वहाँ पर किस चीज की बिक्री हो रही है? The holy name is being sold. हरि नाम का विस्तार हो रहा है। And for what price? और किस मूल्य से? Everything has price, right? How many rupees? हर चीज का एक मूल्य होता है। कितने रुपए में हरि नाम मिलेगा? This, how many rupees? कितने रुपए मिलेगा? There's no rupees for this price. इसके लिए कोई मूल्य नहीं। For the Shraddha, for faith. इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। If you have faith, अगर आपके पास श्रद्धा you है, can purchase the name. तो आप नाम को ग्रहण कर सकते हैं। You may be even a beggar in the street with only 1 paisa. आपके पास एक पैसे वाला भिखारी। Please don't play with it, please. I don't want it blown out again. It's doing okay, isn't it? Can everybody hear? Can everyone hear? Don't touch it. I don't want any, don't touch it. So, for the price of faith, even if you only have 1 paisa, all you need is Shraddha. And then you can purchase the name. And we'll go to the next verse. So many devotees have come. There's a big crowd of devotees there, a big queue of devotees. They come to purchase the name. So what happens then? Lord Nityananda examines each and every one of them to see if they're really qualified or not. Do they have genuine faith? Or they're just pretending to have faith? Do they really have genuine faith? He's checking them out. And then, with each devotee, he bargains with them, you see. This sometimes we bargain. This many rupees, no, this many, they bargain back and forth, isn't it? So bargaining goes on there.
उसके बाद बार्गेनिंग होता है वहाँ पे। And then Bhaktivinoda says, my dear friends, if you really want to buy the holy name, then come with me. उसके बाद श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं कि अगर आपको Can you imagine if you went with Bhaktivinoda Thakur to the marketplace? Can you imagine if you went with Bhaktivinoda Thakur to the marketplace? श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं कि अगर आपको हरिनाम चाहिए तो आप मेरे साथ आइए। तो आप What is Bhaktivinoda Thakur? कल्पना कर सकते हैं आप श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर के साथ। He's the broker. Just like you want to buy real estate, right? तो भक्तिवेदांत ठाकुर There's the owner, the customer, and the broker. तो भक्तिवेदांत ठाकुर एक दलाल है, ब्रोकर। So the broker helps you make the deal, you see. तो इस प्रकार से घर खरीदने के लिए एक ब्रोकर। So Bhaktivinoda comes with you as the broker उसी प्रकार से भक्तिवेदांत ठाकुर to help you purchase Dhamma, you see. तो आपको मदद करने के लिए नाम स्वीकार करने के लिए Bhaktivinoda takes you to meet Lord Nityananda. भक्तिवेदांत ठाकुर आपको नित्यानंदपुर से मिलने के लिए लेकर के जाते हैं। Wow, what an amazing thing. कितना अद्भुत है। And then Bhaktivinoda says, उसके बाद श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं, he guarantees, you see. उसको वो आश्वासन देते हैं, गारंटी देते हैं। Bhaktivinoda is an expert broker. आप कैसे एक एक्सपर्ट दलाल बन सकते हैं? He guarantees you'll be able to पurchase it, yes. वो आपको आश्वासन देते हैं कि आपने जो लिया है। And then what happens? उसके बाद क्या होता है? You get the holy name, आपको हरिनाम मिलता है। and Bhaktivinoda gets a commission. भक्तिवेदांत ठाकुर को कमीशन प्राप्त होता है। So the seller is happy, बेचने वाला खुश है, the buyer is happy, खरीदने वाला खुश है, and the broker is also happy. और You see. दलाल जो है ब्रोकर है वो भी खुश है। So what does Bhaktivinoda say? भक्तिवेदांत ठाकुर जी क्या कहते हैं? He said Lord Nityananda is so merciful. नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं। All you need is faith, श्रद्धा चाहिए। even a little faith. थोड़ा सा श्रद्धा होने से भी, Even if you have a little bit of faith, थोड़ा सा भी आपके पास श्रद्धा है तो, Bhaktivinoda will bargain for you and you'll get the name. और श्री भक्तिवेदांत ठाकुर आपके लिए मोल भाव करेंगे और आपको हरिनाम मिल जाएगा। So then what happens? उसके बाद क्या होता है? When you get the name, जब आपको नाम प्राप्त होता है, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And sometimes what do they say? Gora! कभी-कभी वो कहते हैं गौरा। So if you chant the name Gora, अगर आप गौरंग महाप्रभु का नाम लेते हैं, and you have tears in your eyes, आपकी आंखों से अश्रुधारा बहेंगे, then Lord Nityananda will give you all support. तो नित्यानंद प्रभु आपको सारा He will give you all divine opulences. सारे ऐश्वर्य आपको समर्पित कर देंगे। If you get a tear in your eye chanting Gora, अगर आप गौरंग महाप्रभु का नाम लेते समय अश्रुधारा बहाते हैं तो so he gives you genuinely, then Lord Nityananda will bestow upon you उसके बाद नित्यानंद प्रभु आपको आशीर्वाद देते हैं। genuine realization of the pure teachings of Krishna. उसके बाद आपको कृष्ण के शिक्षाओं का सही साक्षात्कार देते हैं। You will gain full standing of the teachings of Bhagavad Gita. भगवद गीता का पूरा समझ आपको आ जाएगा। And you understand also Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम भी आप समझ जाएंगे। It doesn't matter whether you're Shudra, a Vaishya, a Kshatriya, a Brahmin. ये फर्क नहीं पड़ता कि आप शूद्र वैश्य ब्राह्मण या क्षत्रिय। Doesn't matter if you're a birla with crores and crores of rupees, फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप करोड़पति हैं or you're a beggar, a lame, blind beggar. या फिर आप अंधे पंगु भिखारी हैं। Doesn't matter if you have an MA degree, फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपके पास एमए डिग्री है or you can't even write your name, you're so illiterate. You see. फिर आप नाम भी नहीं लिख सकते हैं, आप एकदम अनपढ़ हैं। If you're walking on crutches with no legs, या आप कृष्ण के चल रहे हैं, या आप पैर it में- doesn't matter. इससे फर्क- He will give you perfect realization of the pure teachings of Krishna. वो आपको एकदम संपूर्ण साक्षात्कार दे देंगे भगवद गीता के अध्ययन का। So now Bhaktivinoda says, भक्तिवेदांत ठाकुर जी कहते हैं, my dear friends, मेरे प्रिय मित्र, please reject all of Maya's snares. माया की सारी चीजों को छोड़ दीजिए। If you're a householder, अगर आप ग्रस्त हैं, do you have to live in the forest, या आपको जंगल में रहना है, give up your apartment, या and sleep under a different tree every night? या अलग-अलग पेड़ के नीचे हर दिन रहना है? Nahi. You can stay in your apartment. आप आपके पास You can have an AC. उसमें एसी है, You can be comfortable, no problem. आराम से रह सकते हैं। And if you're renunciate, अगर आप त्यागी हैं, you can stay in the forest. तो आप वन में रह सकते हैं। Either way, nothing will ever bother you again. इसमें से किसी से भी आपको दोबारा फर्क नहीं पड़ेगा। Nothing will ever bother you ever again. फिर से कोई भी चीज आपको परेशान नहीं Whether you're a householder अगर आप ग्रस्त हैं or you're a sadhu living या in साधु हैं, जंगल living in the Himalayas, हिमालय
हिमालय के जंगल में Nothing, he promises, Bhakti no promise, nothing will ever bother you ever again. ठाकुर आश्वासन देते हैं कि आपको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी आपको So, परेशान नहीं करेगा। so then Bhakti tells us, भक्ति ठाकुर जी हमको बताते we have nothing to fear from this age of Kali. हमको इस कलयुग से डरने की आवश्यकता नहीं है। This is the most horrible age. ये सबसे भयानक। There's quarreling, there's fighting, there's murder, there's rape. It's a horrible age. यहाँ पर समस्याएं हैं, मर्डर है, बहुत सारी अलग-अलग परेशानियां हैं। But Lord Nityananda will give that holy name to anyone and everyone, लेकिन नित्यानंद प्रभु ये हरि नाम सभी को दे रहे हैं, even to the lowest class of men. यहाँ तक कि चंडालों तक ये नाम दे रहे हैं। So therefore we have nothing to fear anymore. इसीलिए आपको भय की कोई आवश्यकता नहीं। So how does Bhaktivinoda end his song? भक्ति ठाकुर जी इस गीत में कहते हैं, He calls out loudly बहुत जोर से चिल्लाते हैं and he proclaims, और ये घोषणा करते हैं, other than the lotus feet of Lord Nityananda, there is no shelter. नित्यानंद प्रभु के चरण कमल के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है। So everyone must come to the lotus feet of Lord Nityananda. सभी लोग बोले नित्यानंद प्रभु के चरण कमल के अलावा कोई आश्रय नहीं। Kodanitai, 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 Kodanitai. And that ends the song. Do you see why I like to give classes in this song? You see why I like to give lectures in this song? It's the most wonderful song. The Beatles can't compete with this. This is the most wonderful song. Wow. Does anybody have any questions? Anyone have any questions? Yeah, right now we can take questions. Write in Hindi and give to me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Any questions? No questions. Can you give me that extra garland? Bring it here. Give me that garland. Bring me that garland. Pushpa. Jai Haribo. Okay. All right. Any questions now? Here we go. In English? Yeah. Oh, Jai. English Bolo. Okay. How to... Let me get my smartphone to light it up. There you are. Okay. Light it up. Come on, you thing. Light it up. There we go. Okay. How to increase faith, or how to build faith. श्रद्धा को कैसे बढ़ाएं? श्रद्धा का निर्माण कैसे करें? Yeah, that's a very important question. बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है.
My dear ladies and gentlemen, मेरे प्रिय सज्जन और दीदियाँ, the good news is अच्छी समाचार ये है, you already have unlimited faith within your heart. हमारे पास हमारे हृदय में एकदम असीमित श्रद्धा है. Not just faith, न केवल but श्रद्धा you है, have strong faith. बल्कि हमको दृढ़ श्रद्धा है. You have unlimitedly strong faith right now sleeping within you. असीमित दृढ़ श्रद्धा है जो हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में है. Just like within a match, जैसे कि एक माचिस के तिली में fire is there. You see. अग्नि होती है उसमें. In fact, one match can light a whole forest on fire. एक माचिस के तिली से पूरे जंगल को One, जला I'll देता है. take one little match. You तो see. एक छोटे से माचिस के तिली से पूरा So जंगल you, को जला you already have that faith within you. तो हमारे सबके अंदर वो श्रद्धा का बीज है. All you have to do is strike the match. और हमको केवल करना है कि उसको जलाना है. And how do you strike the match? एंड उसको कैसे जलाना है माचिस को? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. The more you chant, जितना आप अधिक जप करेंगे, the more your faith increases. उतना आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी. That's why, if possible, तो इसीलिए जितना संभव है, chant 24 hours a day. 24 घंटे जप कीजिए. If you can't do that, अगर उतना नहीं कर you get सकते, some japa mala तो माला लीजिए, जप माला. and chant at least 16 rounds every day of कम japa से कम mala. 16 माला प्रतिदिन जप कीजिए. If you can't do that, chant 15 rounds. उतना नहीं कर सकते तो 15 माला कीजिए. At least one round you must chant in the कम beginning. से कम एक माला कीजिए. That way you can build it up, and boom! उससे थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे The श्रद्धा बढ़ fire of faith will completely burn away all your material desires. पूरी श्रद्धा बढ़ करके सारी जो Okay. भौतिक इच्छाएं हैं उनको Okay. जला देगी. तो समाप्त कर दीजिए. Could you please share your Govardhan Dham memories with us? क्या आप गोवर्धन धाम की जो कुछ यादें हैं उनको हमारे साथ बांट सकते हैं? Well, it was really wonderful. ये बहुत ही सुंदर है. I was staying in an ashram मैं एक आश्रम में रह रहा था. called Sri Rupa Seva Kunj. इसका नाम है श्री रूप सेवा कुंज. And when every day when I would go to the greeting of the deities, और हर दिन मैं जब विग्रह का स्वागत करने के लिए on the जाता way to the greeting of the deities from my room तो मैं मेरे रूम से विग्रह को देखता to the था. temple room, तो मंदिर रूम में जाता था. what did I see? वहाँ पर मैं देखता था. Govardhan. वहाँ से मुझे गोवर्धन. So I was taking Govardhan darshan again and again. Govardhan, 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 तो Govardhan. हर दिन मैं गोवर्धन का दर्शन करता था. Just imagine if every day you could have darshan of Govardhan 20, 30, 40 times every day Govardhan darshan. You आप see? लोग अनुमान लगाइए हर दिन हम 20, 30, 40 बार अगर श्री गोवर्धन धाम का दर्शन. Govardhan is not actually Krishna is manifested as Govardhan. वास्तव में कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए. So by thinking about Govardhan, तो by गोवर्धन के बारे में thinking, by स्मरण seeing Govardhan, करने, गोवर्धन को by देखने, hearing about Govardhan, गोवर्धन के बारे में श्रवण by करने, remembering गोवर्धन Govardhan, को स्मरण करने से your Krishna bhakti becomes more and more and more and more and more. आपकी कृष्ण भक्ति जो है वो और बढ़ जाती है. So one day I went with my disciple Sachinandana. एक बार मैं सचिनंदन प्रभु के साथ गया. Another disciple's name was Govardhan. Govardhan Das. और दूसरे भक्त का नाम था गोवर्धन. We went to a remote area एक बहुत where there was no honk and rupees, beg, very quiet, calm area. बहुत सुना स्थान था जहाँ पर कि कोई भी पैसा मांगने के लिए या कार के हॉर्न्स And there वगैरह. was a fence. वहाँ पर एक We found a way to get through the fence. वहाँ पर एक फेंस था जिसके There was a big, huge grassy area. और फिर अंदर हम गए. And there was a big line of bushes. You couldn't get through it. It was like a fence. It was so thick, thick वहाँ पर bushes. एक झाड़ियों की कतार थी जिसके अंदर हम नहीं जा पाए. But then we found a way to get through the bushes also. तो हमने रास्ता निकाला. हम झाड़ियों An में area where nobody was there, a completely peaceful place. वहाँ पे कोई भी नहीं था. एकदम सुना स्थान था. So we sat there tonight, about an hour we spent there. वहाँ पर हम एक Yeah. घंटे के लिए बैठे हुए थे. Nice Krishna Katha. और वहाँ पर कृष्ण का And it was so, what did we talk about? Remember? What story did we talk about there? Remember? I forget, we talked about some Leela of Krishna, and it was so wonderful. So that's my little memory of Govardhan. And गोवर्धन के बारे में कुछ है. okay, let's see what we have here. All right. If one is chanting is 16 rounds and one devotee is not chanting 16 rounds, remembers Lord most of the time, then one who is chanting 16 rounds, then who is advanced? I'm always remembering Krishna, but I'm not chanting. Somebody is chanting 16 rounds regularly. कोई 16 माला हर दिन कर रहा है. And someone else is not chanting 16 कोई rounds 16 माला regularly. नहीं कर रहा. And what he's saying, what if the one who is not chanting is remembering Krishna more?
जो जब नहीं कर रहा है वो ज़्यादा कृष्ण का स्मरण कर रहा है। As we say in Spanish language, स्पेनिश भाषा में कहते हैं no es posible, not possible. You see. नो, Not possible. ये ऐसा संभव नहीं है। Whoever is chanting more, he's automatically remembering more. जो ज़्यादा जप कर रहा है वो निर्धारित रूप से ज़्यादा स्मरण कर रहा है। He's remembering the order of the spiritual master. वो अपने गुरु महाराज की आज्ञा का स्मरण Chant at least 16 rounds a day. 16 माला प्रतिदिन जप कर रहा है। Well, why should I follow the spiritual master? तो मुझे आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा की One might ask. ऐसा कोई पूछ सकता है। He's not Krishna. वो तो कृष्ण नहीं है। Why should I follow Guru? I मुझे mean, गुरु का पालन क्यों करना है? वो तो कृष्ण नहीं है। well, you know what Krishna says? पता है आपको कृष्ण क्या कहते हैं? Tanvadi pradipatena paripashnena sevaya upadekshnati te jnanam ganina tattvadarshanaha. The spiritual Krishna orders, Krishna, the Supreme Person, orders us भगवान कृष्ण जो है वो हमको आदेश देते हैं। in the Bhagavad Gita, इन भगवद गीता में chapter 4, चौथे अध्याय में he says, just try to learn the truth by approaching the spiritual आप master. सत्य को जानने का प्रयास कीजिए आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर। Inquire from him submissively, उनसे जिज्ञासा कीजिए नम्र भाव से render service unto him. और उनको सेवा कीजिए। The self-realized souls can impart knowledge unto you और आत्म साक्षात्कारी भक्त आपको ज्ञान दे सकते हैं because they have seen the truth. क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। So whoever is chanting more japa, तो जो भी कोई ज्यादा जप कर रहा है they're remembering Krishna more. वो कृष्ण का ज्यादा स्मरण कर रहा है Somebody is not chanting japa, और कोई जप नहीं कर रहा है they are forgetting तो Krishna. वो कृष्ण को भूल गए। That is a fact. ये एक तथ्य है। Next. Okay. One question, okay. We often feel distant from God, especially when our worldly desires, especially when our worldly desires are fulfilled, or when we become absorbed in material affection. Even as a devotee, we struggle to remain realization. Let's take a little bit of time because he is the translator. Okay. We feel distant from God, especially when our worldly desires aren't fulfilled. हमको ऐसा लगता है कि हम भगवान से दूर हो गए हैं विशेष रूप से जब हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। Well, that means you're ignorant. इसका अर्थ है कि आप अज्ञान में हैं। Whatever you're getting is all by mercy, it's Krishna's mercy. जो आपको मिल रहा है वो केवल कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो रहा है। It's not that you can, by your own power, you can get anything. ऐसा नहीं कि आप अपनी शक्ति से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। Even the air you breathe that keeps you alive, that's a gift of Krishna. जो सांस लेने के लिए जो हवा है वो भी कृष्ण ही प्रदान करता है। Everything coming to you is Krishna's gift. जो आपके जीवन में आ रहा है वो केवल कृष्ण का उपहार है। So you're forgetting where it's all coming from. तो आप भूल के जा रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है। We have a saying in English, इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, don't look a gift horse in the mouth. Don't look a gift. Don't look a gift horse in the mouth. Don't look a gift horse in The horse, you know, you ride on the horse. Yeah. The horse is compared to the weaver of a gift. Yeah. And you don't, maybe we can't translate it very well. Don't look a gift horse in the mouth. In Hindi, you'll never be able to translate it in Hindi. It means, घोड़ा मुंह में नहीं देख सकता है, इंग्लिश में ऐसी कहावत है। here's what it means. Never take anything for granted, you see. किसी भी चीज को आप ऐसा अपने आप आ रहा है ऐसा सहज ही मत मान लीजिए। It's always a special gift coming from Krishna. ये हमेशा एक विशेष उपहार है जो कृष्ण की ओर से आ रहा है। That's the first thing to remember. So when you forget Krishna, that means you're a rascal. अगर आप कृष्ण को भूल जाते हैं तो आप भूल गए। You think you deserved it. इसका मतलब आपको लगता है कि आप इसको But actually, we don't deserve anything. लेकिन वास्तविकता है कि हम किसी के लिए Everything is a gift from God. जो हर चीज है वो भगवान का उपहार है, भगवान का भेंट है हमारे लिए। Or when we become absorbed in material desires, we forget that we feel distant from God, we get absorbed in material desires. और भगवान को भूलकर हम भौतिक इच्छाओं में पूरी तरह डूब जाते हैं। Well, getting absorbed in material desires means suicide, actually. अगर आप भौतिक इच्छा में मग्न हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि इसका अर्थ है कि हम आत्महत्या कर रहे हैं। Because you are not your material body. क्योंकि वास्तविकता है कि आप एक भौतिक शरीर You are an eternal spiritual being. आप एक आध्यात्मिक जीव हैं। Your only true happiness is to revive your lost loving relationship with God. That's your only true happiness. हमारी वास्तविक
जो प्रसन्नता है, सुख है, वो केवल हमारा जो भगवान के संबंध है उसको पुनर्स्थापित करने में है। Material desires being fulfilled is only an illusion of happiness. जो भौतिक इच्छाएं हैं वो केवल अज्ञान में सुख देने का, सुख का अनुभव कराते हैं। It is not genuine happiness. ये वास्तविक सुख नहीं है। So you're a fool if you think you forget God when you're enjoying your material senses. अगर आप सोचते हैं भौतिक इच्छाओं के कारण आप भगवान को भूल जाते हैं तो ये मूर्खता है। So how can we stay in devotion always तो कैसे हम भक्ति में सदैव के लिए रह सकते हैं and not get lost in fantasies and fantasies? और हम इस तरह से भगवान को भूल नहीं जाए। So how can we always be Krishna conscious then? तो हम कैसे कृष्ण भावना में सदैव रह सकते हैं? You have to hear from the bona fide spiritual master. आपको एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। You have to hear submissively from the bona fide spiritual master, उनसे आपको ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। who teaches you how to see everything through the eyes of Scripture. वो आपको सिखलाते हैं कि कैसे हर चीज को शास्त्र के दृष्टिकोण से देखना। When you see through the eyes of Scripture, then you see how Krishna is acting in every situation. जब आप शास्त्रिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कृष्ण हर समय पर हर चीज में उपलब्ध है। And then it concludes saying, we say God is dependent on no one. In reality, He's dependent on us. That's bogus. God is dependent on us. अगर कोई कहता है भगवान हमारे ऊपर आधारित है तो ये बोगस है। God doesn't depend on us at all. भगवान हमारे ऊपर किसी तरह से आधारित नहीं है। He doesn't need us. वो He has got plenty of associates in the spiritual world. उनको हमारी आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर करोड़ों Radharani, Mother Jasoda, Nanda Maharaj. वहाँ पर उनकी करोड़ों पार्षद हैं। Krishna doesn't need us at all. तो भगवान कृष्ण को हमारी आवश्यकता नहीं But है। we need Krishna. लेकिन हमको कृष्ण की आवश्यकता है। Next question. और प्रश्न होते हैं? और प्रश्न? Any more? Okay. All right. Please help me understand how will we understand all the principles of Bhagavad Gita by chanting holy names. कृपया करके मुझे बताएं कि हम जप करने से भगवद गीता के सारे सिद्धांतों को कैसे समझें? Well, Prabhupada said like this. प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा। You should study all these books. अगर आप ये सारे बुक का अध्ययन This करते is a हैं science. तो ये विज्ञान है। But even by chanting Hare Krishna, you can realize the whole thing. लेकिन आप केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप करके भी इन सब का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। But that is a very advanced stage. लेकिन ये बहुत ही प्रगत स्टेज है। You have to chant like as a pure devotee, and then it all becomes revealed to you. लेकिन उसके लिए आपको एक शुद्ध भक्त के जैसा शुद्ध नाम का जप करना पड़ेगा। That means no material desires. इसका अर्थ है कि कोई भौतिक इच्छा नहीं। Your only desire is to please Krishna by chanting His name with love. केवल आपकी एक ही इच्छा है कि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके प्रेम से नाम At that stage, Bhagavad Gita, it's all revealed to you. इस स्तर पर भगवद गीता का सारा साक्षात्कार आपको प्राप्त होगा। Just like we learned in the this song was telling something like that too. जैसा कि इस गीत में हम बता रहे थे। But that is a very advanced stage. लेकिन बहुत ही प्रगत स्तर है। If we're not at that level where we can fully absorb the pure bhakti 24 hours a day, we need to study the books. तो अगर हम उस तरह से पूरे 24 घंटा उसमें अब्जॉर्ब नहीं रह सकते तो हमको ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है। The books will help us come to that stage. ये ग्रंथ पढ़ने से, किताबें पढ़ने से हम उस स्तर पर आ पाएंगे। My spiritual master, Srila Prabhupada, ordered me to study all our literatures. मेरे आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे आदेश दिया कि मेरे सारे ग्रंथों का अध्ययन करो। So it's very important to read these books that Prabhupada has given us. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दिए गए ग्रंथों These का books will अध्ययन free us from the material world. करें। ये ग्रंथ हमको भौतिक जगत से मुक्त कर देंगे। We're suffering like anything due to our attachment to this body. हम ये शरीर की आसक्ति के कारण बहुत संघर्ष कर रहे हैं। But this body will be given up today or tomorrow or next year. ये शरीर हमको आज या कल छोड़ना पड़ेगा। Our happiness does not depend on the happiness of the material body, satisfying the body. हमारा जो सुख है ये इस भौतिक शरीर के ऊपर या इसको संतुष्ट करने के ऊपर आधारित नहीं है। Our happiness depends on reviving our lost loving relationship with Krishna. हमारा जो सुख है वो भगवान के साथ हमारे संबंध को जागृत करने के ऊपर आधारित है। How can I serve in my services properly? मैं मेरी सेवा को ठीक प्रकार से कैसे कर सकता हूँ? What kind of service do you do? आप किस प्रकार की सेवा करते हैं? Whose question? किसका प्रश्न? Okay. What's your service? क्या सर्विस है? Any seva given by the counselor. The council? Yeah.
Who is the council? काउंसिल कौन है? काउंसलर कौन है? बाल गोपाल प्रभु। Bal Gopal Prabhu. Well, you have to ask him. उनसे आपको पूछना पड़ेगा बाल गोपाल, He's the one who's engaging you. जो आपको सेवा में लगा रहे। Ask him, are you pleased with my service? वो पूछिए, आप उससे प्रसन्न What am I doing right? What am I doing wrong? Ask him. उनसे पूछिए, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा You can also pray. Who's your spiritual master? हूँ। आपके गुरु कौन है? Not initiated yet? Not initiated. But you can pray to Prabhupada. तो आप प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर सकते हैं। Please guide me. I can do all my service in such a way that pleases you. मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं सारी सेवाएं आपकी प्रसन्नता के लिए कर सकूं। Please, and then you can pray to Krishna also. और आप कृष्ण से भी प्रार्थना कर सकते हैं। My dear Lord Krishna, please bless me. I can serve in a way that pleases you. मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकूं। So sincerely beg Krishna, तो आप कृष्ण से Srila ऐसा Prabhupada, निवेदन कीजिए, प्रभुपाद से प्रार्थना कीजिए, and they will help you from within the heart. और वो आपको मदद करेंगे। Nice question. अच्छा प्रश्न। Next question. How can I keep the right consciousness for all spiritual activities? मैं आध्यात्मिक गतिविधि करते समय अपनी चेतना को अच्छा कैसे बनाए रखूं? It's the same thing. Wow. वही उत्तर है। There's a Bible verse that says, the Lord said let there be light, and behold, there was light. बाइबल में ऐसा कहा गया है कि भगवान ने कहा कि प्रकाश हो और पूरा जगत प्रकाश में हो गया। So, always do it for the pleasure of Guru and Krishna. That's the right move. तो हर चीज को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीजिए, यही सारा है। All right, next question. आगे चलो। If Krishna does not need us, why he misses us? अगर कृष्ण को हमारी आवश्यकता नहीं है तो वो हमको मिस क्यों करते हैं? Actually, Krishna wants loving relationships. वास्तव में कृष्ण जो है वो प्रेम का संबंध चाहते हैं, He doesn't really need us, इसलिए वो आवश्यकता है। but he wants to have loving relationships. वो हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो प्रेम का संबंध हमारे साथ चाहते हैं। So he puts us in a position इसलिए वो अपने आप को एक स्थिति में रखते हैं, where he feels he needs us, इसलिए जहाँ पर उनको अनुभव होता है कि उनको हमारी so he can आवश्यकता have loving relationships with us. है और हमारे साथ वो प्रेम का संबंध बनाना चाहते हैं। He doesn't really need us, but he loves to have a feeling that he needs us. हालांकि वो वास्तव में नहीं चाहते, लेकिन उनके पास एक भावना है कि वो हमको चाहते हैं, हमारे साथ प्रेम का Just like संबंध। sometimes the family, इस प्रकार से they want to have more kids हाँ, परिवार में जैसे प्रकार because it's से fun. लोग It's fun बच्चे having kids. और कुछ लोगों के बच्चे More नहीं, loving relationships. तो बच्चे होते हैं जिससे कि प्रेम का संबंध विकसित करते हैं। In my father's family, मेरे पिताजी के परिवार में there were 7 kids, 7 बच्चे थे, 5 boys and 2 girls. 5 लड़के और 2 लड़कियां। Because there's more loving relationships. The bigger family is just a nice feeling. जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही प्रेम का आदान प्रदान, प्रेम Of की course, समझ- nowadays nobody can afford it. अभी कोई इतने बच्चों को But समझ- previously, there was in the previous they had big families पिछले जमाने में बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे because there was plenty of money for everything. और उनके लिए वो पैसे खर्च करते थे उनको And समझ। all over the world, people have much bigger families than nowadays. You see, और पहले के समय में पूरे विश्व में अभी के समय because से the ज़्यादा economy is बड़े- getting so bad everywhere. You see, अभी जो है समय हर जगह पर खराब हो गया, that people have to have small families. They can't afford to have a big family. इसीलिए लोगों का परिवार बहुत छोटा है, बड़ा परिवार भी चला But नहीं। Krishna can afford it. He can afford it. और उसको चलाने के लिए Krishna can afford a big family. अभी कोई Krishna can afford a भगवान big कृष्ण family. जो है वो बड़ा परिवार संभाल सकते हैं, He has unlimited kids, वो अनगिनत उनके बच्चे हो सकते हैं having unlimited loving relationships. और जिससे कि वो सबके साथ प्रेम का संबंध आदान He didn't प्रदान have to do it, करें। वो उनको करने की आवश्यकता नहीं है, no, but he wants to do it लेकिन वो फिर भी उसको because he enjoys loving relationships. बिकॉज उनको प्रेम के संबंध से उनको आनंद प्राप्त होता And that's the answer. है, ये उत्तर है। Okay. We see that many devotees are leaving ISKCON and going to some so-called Babaji who preaches Mayavad. तो हम देखते हैं कि इस्कॉन में कई सारे लोग इस्कॉन छोड़ करके एक बाबा जी के पास जा रहे हैं जो मायावाद का प्रचार करते हैं। That means they're stupid. इसका मतलब ये बड़ी मूर्खता है। I also lost one of my disciples to Mayavad. I lost one of my disciples also to Mayavad. मेरा भी एक शिष्य जो है एक मायावादी के पास चला गया। Mayavad says, I'm God, you're God, we're all God. मायावाद कहता है कि मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान, हम सब भगवान। But how can everybody be God? लेकिन हर कोई भगवान कैसे हो सकता है? According to their philosophy, the dog on the street is also God. उनके तत्व के अनुसार तो कुत्ता जो है सड़क पर वो भी भगवान। I mean, it's a stupid philosophy. ये मूर्ख भाष्य।
The Guruji says, you give me some dakshina, I will turn you into God. You see. और भगवान कहते हैं मुझे दक्षिणा दो मैं आपको भगवान बना Only a दूंगा। fool would run to a Mayavadi Guru. You see. ये मूर्खता है मायावादी की परीक्षा में। Somebody who's after sense enjoyment, वहाँ पर कुछ इंद्र तत्व के लिए जाते हैं he may be attracted to one of these bogus gurus. तो वो इन तरह के जो बोगस गुरु हैं उनसे आकर्षित हो जाते हैं। But somebody who's sincere about self-realization will never go to these bogus लेकिन gurus. जो एकदम गंभीर है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बारे में कभी भी ऐसे गुरु के पास नहीं I was burned by many bogus gurus. तो मैं भी कई ऐसे बोगस गुरुओं से पहले संपर्क में आया। No matter where I turned, by both gurus I was burned. जहाँ भी मैं गया वहाँ पर मेरा बोगस गुरु They could not even show me light of day. तो वहाँ पर वो मुझे दिन का प्रकाश भी नहीं दिखा। But still I had faith. There's a pathway out of here. फिर भी मुझे ये विश्वास था कि यहाँ से कोई रास्ता है And Krishna showed me the genuine path. और भगवान कृष्ण ने मेरा मार्गदर्शन किया। So somebody who wants to be cheated, अगर कोई धोखा खाना चाहता है Krishna sent them a bogus guru to cheat them. तो कृष्ण उनको एक धोखेबाज गुरु भेज देंगे धोखा देने के लिए। This whole world is full of cheaters and the cheated. इस पूरे दुनिया में धोखेबाज लोग हैं धोखा खाने वाले So लोग। you want to be cheated? There's many bogus gurus out there. Many bogus gurus are all ready to cheat you and take your rupees. अगर हम धोखा खाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे झूठे गुरु हैं जो हमको धोखा दे देंगे। My guru, Prabhupada, मेरे जो गुरु महाराज he's bona fide. वो प्रमाणिक गुरु। He gave me the greatest gift, Hare Krishna mantra. उन्होंने मुझे सबसे महत्वपूर्ण उपहार दिया है। He gave it totally free. There's no charge at all. You see. और इसके लिए कोई मूल्य नहीं है। ठीक है? So if they're so stupid they want to be cheated, let them go. That's all I can say. तो जो लोग इतने मूर्ख हैं जो धोखा खाना चाहते हैं तो उनको जाने दीजिए। Those who don't want to be cheated, you come to the bona fide guru, अगर आप धोखा नहीं खाना चाहते तो प्रमाणिक गुरु के and पास we'll जाइए। teach you how to realize God. और वो आपको बताएं कैसे भगवान के We'll साथ teach you how to go back to your original home in the spiritual sky. और कैसे वापस हमको भगवान के धाम भगवत धाम में जाना। These bogus gurus, they'll keep you locked up in karma chakra. और ये जो बोगस गुरु हैं धोखेबाज गुरु हैं ये जन्म मृत्यु के चक्र में आपको लगा रहने देंगे वहाँ से निकलने देंगे। If one is repeatedly falling down and faith is shaking, और उसका श्रद्धा हिल रहा है then does that mean there's no mercy on that person? अगर कोई बार बार किसी का पतन हो रहा है और उसकी श्रद्धा गिर रही है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई कृपा नहीं है। It's just the opposite. ये इसका विरोध है उल्टा है। That person gets more mercy. You see. ऐसा व्यक्ति को ज्यादा कृपा मिलती है। The spiritual master is especially kind जो आध्यात्मिक गुरु हैं विशेष रूप से कृपा दिखाते हैं upon those disciples who are having a great struggle, उन शिष्यों के ऊपर जिनके जीवन में ज्यादा संघर्ष है having a great difficult time. The spiritual master gives special mercy to जिन them. लोगों के जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा है उनके ऊपर गुरु विशेष कृपा करते हैं। Is that it? Anything else? What's our cutoff time? What time do we quit? ठीक है, मैं समाप्त। We will wind up here. Hmm? We will close here. 7? No, we will conclude here. You're saying we conclude. 6:30? What time do we end? Now We we can can conclude. conclude. We can conclude, he's saying. We Till can what end- time? We can end now. We can end now. Okay. All right. Of course, anybody, special mercy. Here's another question. So, Prabhuji, my question is, how can we cultivate devotion that is real and grounded? So, I was the one who asked you about being distant from God. What's the question? Translation? We can increase our devotion. Let him give the translation first for the Hindi. मैंने ये प्रश्न पूछा था कि कैसे हम भगवान से इतने दूर हैं तो मेरा प्रश्न है कि हम भगवान के प्रति सही भक्ति भावना कैसे जागृत कर सकते हैं How we can have true devotion for the Lord. I ask you the question. How we can have devotion? Yeah, devotion to the Lord, as we are grounded to the I mean, as a being an outsider, who it's easy to remember God in temples and in devotees, but being outside, being in this brutal reality world, and we eventually feel distance from God, right? So, how to be stable in He's outside. He stays outside. भौतिक जगत में He does रहते not- हुए Wait, let me hear him. Yeah. So he stays outside, and he sees the reality in this world. So he's He's not what? in. He's He in sees this the world? reality in this world. He's So many saying, different, what about reality? different things happening in the world. So he's not in touch with the temple. So it is difficult for him to remember God. All right. You बाहर रहते हुए बाहर की दुनिया में रहते हुए जब भक्ति go, में you have the नहीं internet रहते, on your phone? तो you have कैसे internet भगवान का connection? स्मरण करना कैसे भक्ति करना Okay, go to www.joincourse.com.
Go there right now. www.joincourse.com. आप सभी लोग ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं www.joincourse.com. Give your name and email address and sign up. You'll see my picture there. ईमेल आईडी दे सकते हैं. Free. Did he find it? He found the page? He found the page? And put your name and email address and you're in. Now you connect with me. Every day I'll send you something in the email and you can write me whenever you want. We'll stay connected every day. And I'll be your contact whenever you want. I'm always with you. Hare Krishna. Next? Anybody else? Everybody's finished? Bus? We say bus or bust? There is a question. Question. Mike. Not audio. Hare Krishna. Hare Krishna. My question is that how do we stay balanced in our sadhana and our seva? How to remain balanced in our sadhana and seva? Balance is very important. Thanks for your beautiful question. साधना और सेवा में हम संतुलन कैसे बनाए रखें? साधना और सेवा में जो संतुलन है वो बहुत ही आवश्यक है. Just like being balanced means whether if things are going nicely or not going nicely, I see it all as Krishna's mercy. बैलेंस संतुलन का अर्थ है जब चीजें अच्छी चल रही हैं और जब चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, दोनों स्थिति में कृष्ण का स्मरण बनाए रखना. I always see everything as Krishna's mercy. हर चीज को कृष्ण की कृपा के रूप में देखना. Whether you're sick, you're healthy, जब आप बीमार हैं और जब आप स्वस्थ हैं, whether people are praising you or scolding you, जब लोग आपका सम्मान करते हैं और जब लोग आपका तिरस्कार करते हैं, whether you're succeeding in what you're doing, you're failing in what you're doing. जब आप सफल हो रहे हैं जो आप कर रहे हैं या फिर आप In every situation, see how Krishna is blessing you. हर परिस्थिति में ऐसा देखना है कि कैसे कृष्ण अपना आशीर्वाद हमको प्रदान You करते can say, my dear Krishna, हैं. उनको कहना चाहिए मेरे प्रिय कृष्ण, you're the puppeteer and I'm the puppet. आप कठपुतली को चलाने वाले हैं और मैं कठपुतली. Now you pull my strings as you like and I will dance for you. आपको जैसे डोरी खींचनी है वैसा खींचिए और मैं उसी प्रकार से नृत्य करूँगा. So in this way, Krishna is blessing you at every minute. इस प्रकार से हम हर समय कृष्ण का जो आशीर्वाद है उसका अनुभव करते हैं. And always tries to please him with your every thought, your word and deed, every word and every deed in all times, places and circumstances. तो हमको हर काल समय परिस्थिति में और हर अपना काया मनसा वाचा से भगवान को प्रसन्न करने In this way, you'll be a fully God-realized soul, और हमको एक पूर्ण रूप से साक्षात्कारी व्यक्ति बनना है. and you'll be perfectly balanced in every situation. और इस प्रकार से हम हर परिस्थिति में The, एकदम अच्छा the balance good बना सकते हैं. situations, the bad situations, और अच्छे सिचुएशन में भी बुरे परिस्थिति, the beautiful situations, एकदम सुंदर परिस्थिति में भी, and the ugly बहुत situations. कुरूप परिस्थिति में भी. In every situation, your head will be stuck to the lotus feet of Radha and Krishna. हर परिस्थिति में हमारा जो सिर है भगवान के चरण कमल में ही लगा रहेगा. Do you understand? Now follow what I told you. Next question. और कोई प्रश्न है? Or bus. Yeah, there is a question. Hmm? She has question. Hare Krishna Prabhuji. Pranam. Prabhuji, many times we tend to take devotees for granted. So how can we just improve ourselves at that? We take great devotees for granted, she said? Yeah. कई बार हम भक्तों को सहजता से लेते हैं, उनका मूल्य नहीं समझते हैं, तो हमको कैसे उनको गंभीरता से लेते हैं. Don't look a gift horse in the mouth. Don't worry about it. Don't look a gift horse in the mouth. You won't be able to translate it.
For English, they can understand a little bit. In Hindi, forget it. But anyway, you have to understand, after millions and billions of lifetimes, हमको समझना चाहिए कि कई कई लाखों जन्मों से going through the 8,400,000 species again and again, 84 लाख योनियों में बार बार भ्रमण करते करते sometimes an aquatic, कभी मैं जल का चर होता हूँ, sometimes an insect, कभी मैं कीड़ा बन जाता हूँ, sometimes a worm, कभी मैं कीड़ा बनता हूँ, sometimes a bird, कभी मैं चिड़िया बन जाता sometimes a tree, हूँ, कभी पेड़ बन जाता हूँ, sometimes a human being in the earthly planet, कभी मनुष्य बन जाता हूँ, sometimes in the hellish worlds, कभी कभी नर्क में, sometimes in the heavenly कभी worlds. स्वर्ग में। You've been through so many situations. तो हम इतने सारी परिस्थितियों से गुजरे हैं, But to come in contact with a bona fide spiritual master लेकिन जब हम एक प्रमाणिक गुरु के संगत में आते is the हैं, most inconceivable mercy. तो ये बहुत ही इनकॉन्सेबल कृपा After हमारे पास। millions and billions of lifetimes, ये बहुत लाखों करोड़ों वर्षों के बाद now I have come in contact with the bona fide spiritual master. अभी मैं एक प्रमाणिक गुरु के संग में आया हूँ I've come in contact with the process of Bhakti Yoga. और मैं भक्ति योग के प्रणाली में आया हूँ। So now I must make my life successful. अभी मुझे मेरे जीवन को सफल बनाना चाहिए I should not miss this opportunity. और मुझे इस समय को और मौके को गंवाना नहीं चाहिए, I must not lose this opportunity. मुझे इसको खोना नहीं चाहिए। Now I must take full advantage अभी मुझे निश्चित रूप से and become a self-realized soul. Right here, right now, I must do this. जिससे कि मैं आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ति बन जाऊँ अभी इसी समय। Do you understand? Okay. Thank you very much.